The world is your home, Lord, our heart is your home. A heart full of love, Lord, my heart is your home. We are the children, children of Sai. 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 Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Love all, serve all is your call. Love if you can, hurt no one in despair. For you are the Father and we are the children, children of Sai. 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 Kali Yuga Deva Avatara. You have come to guide us all. Sachidananda Avatara. Guide us all, lead us all. Guide us all, lead us all. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara. We love you, Father, show us the way. Sachidananda Avatara. We love you, Mother, show us the way. We love you, Mother, show us the way. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Children of Sai. Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी।
तयानस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः
ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः तुहि श्रुतं गर्तसदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः
तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि श्री गणपति ओम हरि श्री गणपति हरि श्री गणपति ओम हरि श्री गणपति हरि गणपति ओम हरे गणपति हरि गणपति ओम हरे गणपति विश्वाधारा विघ्न विनाशक विश्वाधारा विघ्न विनाशक विश्वाधारा विघ्न विनाशक विश्वाधारा विघ्न विनाशक वीर गणपति ओम वीर गणपति वीर गणपति ओम वीर गणपति हरि गणपति ओम हरे गणपति हरि गणपति ओम हरे गणपति
मनोहरि साई जग जननी अम्बा अम्बमन्दहासवदनी मनोहरि साई जग जननी अम्बा मन्दहासवदनी मनोहरि साई जग जननी माता 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 जग जननी अम्बमन्दहासवदनी मनोहरि साई जग जननी अम्बा मन्दहासवदनी मनोहरि साई जग जननी जग जननी शुभकारिणी जग जननी शुभकारिणी हे साई जगन्माता सत्य साई जगन्माता सत्य साई जगन्माता अम्बा मन्दहासवदनी मनोहरि साई जग जननी माता 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 जग जननी अम्बा मन्दहासवदनी मनोहरि साई जग जननी जग जननी शुभकारिणी जग जननी शुभकारिणी सत्य साई जगन्माता सत्य साई जगन्माता सत्य साई जगन्माता अम्बा मन्दहास वदनी मनोहरि साई जग जननी Without singing to the Lord, there's no peace or happiness. Without singing to the Lord, there's no peace or happiness. Without singing to the Lord, there's no peace or happiness. Without singing to the Lord, there's no peace or happiness. Without praising His name, there's no feeling of bliss.
serving mankind, no salvation can there be. Without serving mankind, no salvation can there be. Without singing to the Lord, there's no peace or happiness. Without singing to the Lord, there's no peace or happiness. We find union with Him when our minds are at rest. We find union with Him when our minds are at rest. We find union with Him when our minds are at rest. We find union with Him when our minds are at rest. The best wisdom is seeing the Lord everywhere. 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 The most righteous of deeds shows compassion and care. The most righteous of deeds shows compassion and care. The most righteous of deeds shows compassion and care. The most righteous of deeds shows compassion and care. There is no one as near and as dear as the Lord. There is no one as near and as dear as the Lord. There is no one as near and as dear as the Lord. There is no one as near and as dear as the Lord. He is present in all and in all can be adored. He is present in all and in all can be adored. He is present in all and in all can be adored. He is present in all and in all can be adored. Without singing to the Lord, there's no peace or happiness. Without singing to the Lord, peace or happiness. Without praising His name, there's no feeling of bliss. Without praising His name, there's no feeling of bliss. With no love and devotion, we never will be free. Love and devotion, we never will be free. Without service to Him, no salvation can there be. Without service to Him, no salvation can there be. Without serving mankind, no salvation can there be. Without serving mankind, no salvation can there be. Without singing to the Lord, there's no peace or happiness. Without singing to the Lord, peace or happiness. We find union with Him when our minds are at rest. Find union with Him when our minds are at rest. The best wisdom is seeing the Lord everywhere. The best wisdom is seeing the Lord everywhere. The most righteous of deeds shows compassion and care. The most righteous of deeds shows compassion and care. There is no one as near and as dear as the Lord. There is no one as near and as dear as the Lord. He is present in all and in all can be adored. He is present in all and in all can be adored. He is present in all and in all can be adored. He is present in all and in all can be adored. Without singing to the Lord, there's no peace or happiness. चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो गङ्गाधराय नमो गङ्गाधराय नमो गङ्गाधराय नमो गङ्गाधराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय
शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो साईश्वराय नमो साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो गङ्गाधराय नमो गङ्गाधराय नमो चन्द्रशेखराय नमो चन्द्रशेखराय नमो ॐ नमः शिवाय नमो ॐ नमः शिवाय नमो हर हर हराय नमो हर हर हराय नमो शिव शिव शिवाय नमो शिव शिव शिवाय नमो साईश्वराय नमो साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो सत्य साईश्वराय नमो चन्द्रशेखराय नमो मनवा बोलो राधे 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 श्याम नाम बोलो राधे 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 श्याम नाम मनवा बोलो राधे 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 श्याम नाम बोलो राधे 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 श्याम नाम राम 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 बोलो राम सीता राम 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 नाम हे मनवा बोलो राधे 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 श्याम नाम मनवा बोलो राधे 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 श्याम नाम रंग 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 बोलो पांडुरंग बाबा 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 नाम प्रतिवासा साई देवा 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 पांडुरंग बाबा नाम तुकाराम नाम देवा भक्त सखा बाबा नाम राम नाम देवा भक्त सखा बाबा नाम तुकाराम नाम देवा भक्त सखा बाबा नाम राम नाम देवा भक्त सखा बाबा नाम पांडुरंग 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 बाबा नाम मनवा बोलो राधे 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 श्याम नाम मनवा बोलो राधे 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 श्याम नाम राम 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 बोलो राम सीता राम नाम राम 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 बोलो
श्याम हे मनवा नाम। बोलो राधे 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 श्याम नाम। रंग 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 बोलो पांडुरंग बाबा नाम। रंग रंग रंगा बोलो पांडुरंग बाबा नाम। प्रतिवासा साई देवा पांडुरंग बाबा नाम। प्रतिवासा साई देवा पांडुरंग बाबा नाम। तुकाराम नाम देवा भक्त सखा बाबा नाम। तुकाराम नाम देवा भक्त सखा बाबा नाम। पांडुरंग 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 बाबा नाम। मनवा बोलो राधे 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 श्याम नाम। नंद नंदना नवनीत चोरा। नंद नंदना नवनीत चोरा। गोकुल बाला वेणुगोपाला। नंद नंदना नवनीत चोरा। मथुरा नाथ हरे कृष्ण गोपाला। मथुरा नाथ हरे कृष्ण गोपाला। श्याम गोपाला साई गोपाला। श्याम गोपाला साई गोपाला। वनमाली गिरिधारी श्याम गोपाला। वनमाली गिरिधारी श्याम गोपाला। गोकुल बाला वेणुगोपाला। गोकुल बाला वेणुगोपाला। नंद नंदना नवनीत चोरा। गोकुल बाला वेणुगोपाला। मथुरा नाथ हरे कृष्ण गोपाला। श्याम गोपाला साई गोपाला। वनमाली गिरिधारी श्याम गोपाला। गोकुल बाला वेणुगोपाला। गोकुल बाला वेणुगोपाला। नंद नंदना नवनीत चोरा। अल्लाह अल्लाह करो पुकार। अल्लाह अल्लाह करो पुकार। अल्लाह अल्लाह करो पुकार। अल्लाह अल्लाह करो पुकार। सत्य साई की जय जयकार। 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 यीशु पिता की जय जयकार। यीशु पिता की जय जयकार। यीशु पिता की जय जयकार।
जयकार, यीशु पिता की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, ज़ोराष्ट्र की जय जयकार, ज़ोराष्ट्र की जय जयकार, ज़ोराष्ट्र की जय जयकार, ज़ोराष्ट्र की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, अल्लाह अल्लाह करो पुकार, अल्लाह अल्लाह करो पुकार, सत्य साई की जय जयकार, सत्य साई की जय जयकार, यीशु पिता की जय जयकार, यीशु पिता की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, ज़ोराष्ट्र की जय जयकार, सौराष्ट्र की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, सर्वधर्म की जय जयकार, अल्लाह अल्लाह करो पुकार। अपार करुणा सिंधु कृपा सिंधु दया सिंधु, 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 अगणित गुण गणदामा आत्मा रामानंद रामा, अगणित गुण गण रामा आत्मा रामानंद रामा, अगणित गुण गणदामा आत्मा रामानंद रामा, अगणित गुण गण रामा आत्मा रामानंद रामा, भाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, भाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिं भजे राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, मारुतिं भजे राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, मारुतिं भजे राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, मारुतिं भजे
सिंधु कृपा सिंधु दया सिंधु अपार करुणा सिंधु कृपा सिंधु दया सिंधु अगणित गुण गणदात्मा रामानंद रामा अगणित गुण गणधामा आत्मा रामानंद रामा बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं भजे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 मारुतिं भजे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 भक्त जन प्रिय साई राम सत्य साई राम पति साई राम भक्त जन प्रिय साई राम साई राम पति साई राम भक्त जन प्रिय साई राम सत्य साई राम पति साई राम भक्त जन प्रिय साई राम साई राम पति साई राम अपार करुणा सिंधु कृपा सिंधु दया सिंधु शंभो शंकर देवा शंभो शंकर देवा भोले बाबा महादेवा साई बाबा महादेवा सत्य साई बाबा महादेवा पाहि प्रभो शरणं देवा पाहि प्रभो शरणं देवा भोले बाबा महादेवा साई बाबा सत्य साई बाबा ओ शंकर देवा भोले बाबा महादेवा साई बाबा पाहि प्रभो शरणं देवा पाहि प्रभो शरणं देवा हर हर गंगे महादेवा हर हर गंगे महादेवा ओम हर हर गंगे महादेवा ओम हर हर गंगे महादेवा हर हर गंगे महादेवा हर हर गंगे महादेवा हर हर गंगे महादेवा ओम हर हर गंगे महादेवा श्याम सुंदर मदन मोहन
ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಕರುಣ ಸಾಗರ ಕಮಲ ನಯನ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ಕರುಣ ಸಾಗರ ಕಮಲ ನಯನ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ನಂದನ ನವನಿ ಸುಂದರ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ನಂದನ ನವನಿ ಸುಂದರ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಮದನ ಮೋಹನ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ ನಂದನ ನವನಿ ಸುಂದರ ಬೃಂದಾವನ ಮುರಾರಿ श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्धबोध तो कंठ विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्मवस्तु योगशक्ति तु यशोपिता प्रभुतो रुद्र विष्णु तो रामकृष्ण तो रहे बटाओ तो रहे बटाओ तो वासुदेव गुरुश्वरो पदु चिदानन्द हरिदो अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिवदो आत्मलिंग शिवदो आत्मलिंग शिवदो असतो मा सत्यमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृतं गमया Om Shri Sai Ram. In his discourse on the 21st of November 1985, Bhagavan Sri Satya Sai Baba gave 10 guiding principles that should govern our lives. Join me in reciting these 10 guiding principles. Number 1. Love and serve your country. Do not be critical of others' countries. 2. Honor and respect all religions as pathways to God. 3. Love all humanity as part of your family. Know that humanity is a single community. 4. Keep your home and surroundings clean. 5. Help the needy with food, clothing, and shelter. Help them become self-reliant. 6. Be examples of honesty. Do not participate in any activity such as bribery or corruption. 7. Curb jealousy, envy, and hatred. 8.
Develop self-reliance. Become your own servant before proceeding to serve others. 9. Adore God. Abhor sin. 10. Observe your country's laws and be an exemplary citizen. Jai Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Swami and a loving Sai Ram to all our brothers, sisters, respected elders and children tuned in tonight. We pray that with Swami's grace, you and your families are healthy, happy and peaceful. Swami says, you are trying through various means to live and spread the ideals of Sai and the principle of love of Sai. How far have these efforts succeeded? How much good has it done to the world? How much has it helped in recognizing the humanness in man? Along with the process of listening to the exposition of the ideals and of the message, they must be practiced in daily life. Only then can you declare that you grasped the meaning and purpose of ideals of Sai. Everyone must become the embodiment of love. The principle of love can be promoted only through love. The absence of love is at the root of the anarchy that stalks the world today. Unchecked self-interest, misdirected activity, the wild antics of the ego, pompous living, and the feeling of envy have caused this monstrous situation. Do not allow even a trace of ego, pomp, or immorality to pollute your actions. These three qualities strengthen the feeling of selfishness. Peace and prosperity can dawn on the world only when you move in society with love that is free from the taint of selfishness. Divine Discourse, November 19th, 1980. The announcements for this week are as follows. South African Pilgrimage 2026. The Sri Satya Sai Global Council of South Africa will be undertaking a Parthi Yatra, a sacred pilgrimage to Prashanti Nilayam in 2026 July. The pilgrimage coincides with the July school holiday in South Africa. Please save the date, as planning will commence soon. Gayatri Mantra chanting. We humbly ask all devotees to continue chanting the Gayatri Mantra 3 times a day, and if possible, let us all chant together at 7 p.m. 108 times. Chanting the Gayatri Mantra is one of the most potent forms of seva we can do, as it is selfless and will go to wherever it is needed, unbeknown to us. Prayers for healing. A WhatsApp group has been created to allow devotees to pray for those in need of healing or upliftment. If you have a family member, friend, or know of any person who needs prayer, please contact any of the national devotional coordinators to post the request on this group. Wheelchair Reuse Program. The National Go Green team would like to thank all devotees that have supported the Wheelchair Reuse Program. With Swami's grace, we have now loaned out 96 wheelchairs at no cost to needy recipients. There is still a dire need for wheelchairs, as sadly the demand is becoming greater than our supply. Devotees are encouraged to continue to support this program by donating their second-hand or new wheelchairs, spreading Swami's divine love to those in need. Please do reach out to your regional Go Green champion for more details. The theme for Swami's centenary birthday year in South Africa is Sadhana, the inward path, the journey from I to we to he. Swami said that to get rid of demonic qualities, man has to embark on self-inquiry. Scriptural scholarship is of no avail in this inquiry, and the transformation must take place within. People have to ask themselves how they are using the time that has been given to them.
To assist in this spiritual journey, the Sri Satya Sai Global Council of South Africa has launched an online spiritual self-audit tool that may be used to track one's progress on the spiritual path. The tool may be accessed via the link sent out with the national communications. National Eye Clinic. The National Medical Wing of the Sri Satya Sai Global Council of South Africa, together with the North Coast, Phoenix and Durban regions, invites medical professionals to serve at our Sri Satya Sai Centenary National Eye Clinic on Sunday the 2nd of November at the Sri Satya Sai Educare Center in Phoenix. If you are an ophthalmologist, optometrist or other eye care professional, we humbly seek your expertise and urge you to confirm your availability with our coordinating optometrist, Sister Tara Rajkumar. Further details have been provided in the national announcements. The Sri Satya Sai Global Council of South Africa, Gauteng, lovingly invites you and your families to participate in a float procession and human values walk in commemoration of Swami's centenary birthday celebrations. Please do join us at the Sri Satya Sai School in Lenasia South on Saturday the 27th of September starting at 8:30 in the morning. Devotion or bhakti is one of the yogas that Lord Krishna gave us to become closer to Him and reach the goal of liberation. However, what type of devotion should we have? In this evening's video, Brother Amey Deshpande relates an experience with Swami in Kodaikanal, in which Swami made clear his preference for devotion versus transformation. We pray that you have a peaceful and blessed week ahead. Jai Sai Ram. Let me take you back to 2005. Some of us had the opportunity to travel with Swami to Kodaikanal. And Kodaikanal is a very different Swami that you will see, because you will see Swami at the back. In the sense, you will see the behind the scenes of Bhagwan. Oftentimes in Prashanti, Vrindavan and all, you will see Swami coming out for darshan. In Kodaikanal, you will see Swami going out for darshan. Right? So you will see what happens before darshan, what happens after darshan. Right? So our first darshan will be in the morning at around 6 o'clock. Fresh like a fresh lily. Okay, immediately after bath, Swami will open his bedroom door. Okay, and you will see Swami just having had bath. That will be your first darshan, and then Swami will ask. And there will be just one wall, in between. So on one side there are students sleeping, on the other side is Swami's bedroom. Okay, and then Swami will say, Ninna ratri nen baga padkoledu. Swami said, I didn't sleep properly. Somebody was snoring outside. So there were strict instructions. Hey, all snorers go to ground floor. Because Swami used to stay on the first floor. Okay, so I didn't know whether I snore. Which snorer knows whether you're snoring or not? So I just took the easier way out. I said, I'll go to ground floor. Right? So it's like that. It's that kind of Swami that you will kind of see over there. It's absolutely like intoxicating proximity. You cannot go away from Swami. The farthest you will be sitting will be about 5 feet away, from Swami. Like that it is. So you'll have breakfast and lunch and snacks and dinner with Swami. So on one of the days, we were about to get ready to go for the evening bhajans, which happens in the Sai Shruti Bhajan Hall. And the beauty of that Swami is the amount of expectancy that devotees have for Swami. Swami also has that much expectancy to go and see his devotees. You know what he would do? Before darshan, he will open the curtain and see all devotees. And then he'll say, Chudu, yantamanti vacharu. See how many of them have come. Just imagine, for Lord of the Universe, he's looking expectantly at all his devotees who have come. Okay, and then he'll say, Papam, chala, chudani yanta challaga undi. See how cold it is, and they have braved all that cold to have darshan. Okay, and then he'll say, look at you fellows. That will be the typical thing. Like we also wanted to, Swami, at one point of time, we were also there, Swami. Means, because of our great good, prarabdha karma, we have come here. Anyway, for those of you who get it. Right. So, we would see this part of Swami. And so one day, just before bhajans were about to start, Swami asks,
Chudu, whether the bhajan hall is full or not. No, see whether devotees have assembled. And so our Vishnu sir, he went over there and he said, Swami, Andaru vachar Swami, it's full, jam-packed Swami. Andaru meekosam, they are waiting for you. Velandi, Pillalu, oh, come on, legandi, he'll say, get up, go for bhajans. Start bhajans, I am coming. No, that's the signal. And then Swami says, Chudu, yanta bhakti undi. See the devotees, how much devotion they have. Okay, so this is one of those moments. And so we, by then we know how much Swami loves devotees. So we are just nodding, and then Swami says, suddenly, Swami had gotten up. Suddenly Swami turns back and turns around and says, but, means in Telugu he says, Kani, naku ni devotion voddu. I don't want your devotion. Okay, now when he said that, the first thought I said, whoa, hang on. What are you saying? If God doesn't want devotion, then what does God want? Swami is telling, I don't want your devotion. Okay, and then a few seconds later, Swami says, I want transformation. I don't want your devotion. Okay, now just think about this statement, devotion versus transformation. So in fact, Swami went on to say, why I don't want your devotion? Yendukante, because devotion vastundi potundi. Swami said, devotion comes and goes. You know how? Think about it. It will come on a Sunday evening or it will come on a Thursday evening. Okay? A beautiful bhajan is sung, just like our brothers and sisters, so beautifully they sang. The Om starts and a beautiful bhajan comes and Swami. And tears starts to flow down your eyes, and it creates all the right kind of spiritual vibes. Okay? And then the bhajan gets over, Om Shanti Shanti Jai Bolo Bhagwan Shri Jai. Go back and my life is back to normal. Yeah, I cried. Good enough. There is no impact of bhajans. Why? Because the devotion came and it left. As soon as it came, with the same speed it has gone. You think there is any dearth of devotion in this world? Go to any temple in this country. This country, especially in India. Right? Temples are filled with people. You go to Tirupati, you go to Shirdi, you go to Kedarnath, you go to Vaishno Devi, you go to any place. You come to Prashanti Nilayam, full of devotees. Okay, so there is no dearth of devotion in this country, in this world. Swami is saying, I don't want that. I'm not interested in that. What I want is something that when it comes, it never goes. And that is transformation. Swami said, transformation, once you cannot untransform. Once you transform, once a larvae becomes a butterfly, once a stone becomes a idol, once a seed becomes a tree, it cannot become another seed again. It remains forever. The transformation is permanent. I want that. That is what we need to reflect upon. In our own spiritual journeys, is my devotion coming and going, or is my devotion coming and growing? That growth of devotion is transformation. Om Jai Jagadish Hari Swami Satya Sai Hari Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana
शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।